So we have started with center of stiffness calculation, and this was our plan of the building, 6 meter by 6 meter, and 4 corners are placed at 4 corners, and this one is the shear wall, right? Then this, the line, center line passing through this 2 column in x direction, I am denoting as A as per our previous lecture. Then line passing through this C1 and C2 column, I am naming this as grid B. Then line passing through this center of shear wall, that is grid C. Line passing through this C1 and C3 column in vertical direction, I am naming as 1, grid 1. Line passing through this shear wall in this Y direction, I am naming as grid 2, and this is my grid 3, C2, C4 column, right? Now you need to give me answer of each and every stiffness of column, because I don't have previous lecture PPT with me, so I required answer from your side. The very first, as I explained earlier, that how to find center of stiffness. So x center of stiffness means center of stiffness in x direction. So we have this notation in x and this is y direction. So x center of stiffness is equal to summation of ki into xi by summation k, right? So this will give the center of stiffness in x direction, and same way y center of stiffness is equal to summation of ki into yi upon summation k, right? Now to find the center of stiffness, it is easy to make this center line in grid view, like grid A, B, C in x direction, grid 1, 2, 3 in y direction. Now what we will do is, because why this grid kind of thing we are implementing in the center of stiffness calculation, because this is very simple plan, so it is very easy to calculate without doing this grid. But if you have plan which is having number of columns, number of shear wall, then in that case it is easy to consider the line passing through all the column element in x direction and give the name as grid A. So you can directly find Ka, that is stiffness of A grid, by considering the stiffness of all this column, this is column, this column, this column and this column stiffness together, add stiffness of all this column, that will give the K. Now how to find this K? So very first Ka is equal to, write down in your notebook also, Ka is equal to stiffness of, lateral stiffness of all the lateral resisting element, write down stiffness of all the lateral resisting element in grid A, about xx axis, about xx axis. Sorry, Ka is about yy axis. Sorry, Ka is stiffness of all the lateral resisting element, stiffness of all the lateral resisting elements in grid A about yy axis, about yy axis. लिखा? Yes, ma'am. So K is the lateral stiffness of lateral resisting element available in grid A about yy axis. So in grid A, C3 and C4 column are there. So stiffness of matlab K C3 about y. So K C3y plus one more column is available, that is K4 element. So plus K4
KC4, KC4Y. Right, no other columns are available, so Ka grid is equal to KC3Y plus KC4Y. Now let me know what is Ka value. You have this stiffness of C3 column, stiffness of C4 column in Y direction. So add that 2, you will get the total stiffness of grid A. 17.86 into 10 raised to 6. 17. Yes, ma'am. 17.86 0.86 into 10 raised to 6 unit, Newton per meter. right? So this is Ka grid. Same way Kb grid. So what is Kb? Kb is the lateral resisting total stiffness of lateral resisting element available in grid B about YY axis. So in B grid C1 and C2 columns are available. So summation of stiffness of C1 column about Y plus C2 column about Y. So you will get stiffness of KB column, KB grid. Same as Ka. 17. Same as, because all your columns are of same cross section, so that won't give any change in your value. Now KC. KC is stiffness of lateral resisting element available in C grade about YY axis. So that is K of shear wall about Y axis. So what is that? 176.92 into 10 raised to 6. 92 into 10 raised to 6 Newton per meter. Right. Same way you required to find K1, K2 and K3. And what is this K1, K2, K3? Is the total stiffness of lateral resisting available in grid 1 about XX axis. So K1, C1 and C3 columns are available. So KC1X plus KC3X. You will get K1. K2 means K shear wall about X axis. K3 means KC2 about X plus KC4 about X. Right, so you find out and write it down in your notebook K1, K2 and K3. Clear? लिख दिया K1, K2, K3 का वैल्यू आपकी नोटबुक में? Yes, ma'am. Ma'am, this Kc value is 1.76. Ma'am. Was nice. 1.76. Yes. About Y. चलो. So this is your all grid calculation, grid stiffness in X and Y direction. Right. Now as per the equation,
center of stiffness in x direction. So this is your origin point. I'm considering this point C3 column as my origin point, right? This Ki means summation of all the element available in x direction into xi. What is this xi? Xi is the center distance of that particular element about origin, from the origin or about origin, right? So if I want to write x center of stiffness, so x center of stiffness is equal to, now distance from xi. So you need to consider the stiffness grid which is having kx value, that is stiffness in x direction, means k1, k2, k3. The very first is your k1 grid. So k1 grid means this grid, right? K1. So you need to write down summation of this k1 grid into distance of k1 grid from origin. What is distance of k1 grid from origin x direction? 0. 0. Right. So here you need to write down 0. Same way you need to do second grid. Second grid is k2. K2 into. So K2 into distance of K2 grid from origin. So what is that? This is your K2 grid. 3. 3 meter. Right. So K2 into 3 plus K3 into distance of K3 grid from the origin. What is that distance? 6. 6. This whole divided by total stiffness of element in x direction. So K1 plus K2 plus K3. Right. So this you will get x center of stiffness. Let me know the value. So this term will be 0. This will be 0. Put value of K2, value of K3, and here K1 plus K2 plus K3. Three meter. Of mass point, right? Same way y center of stiffness. Same way y center of stiffness. So what is that? Ka into distance of Ka grid from the origin in y direction. What is that? Distance of Ka grid from the origin in y direction? 0. 0. Right. Same way Kb into 3 plus Kc into 6 divided by K plus Kb plus Kc. You will get y center of stiffness. You must get your this value is 3 meter only. Clear? Check karo whether you are getting the same answer or not. Are you getting the same answer?
चेक करो। Yes or no? Are you getting y center of mass is equal to 3 meter? Are you wanting me to speak only without asking you whether you are understanding or not? એમ આવી જાય છે. Then please say yes or no. No. Huh? બોલીશું મેમ yes no. Because then only I can understand whether I should proceed or not. So from this, the center of stiffness in x direction, center of stiffness in y direction is 3 meter. And as we did the calculation for center of mass for the same building, the center of mass value for this building in x direction is also 3, y direction is also 3. So we have seen this criteria where if the center of mass and center of stiffness both are coincide with each other, what is that meaning? The building is said to be the torsionally uncoupled building. Torsionally uncoupled building means only the transformation or translation will taking place and no rotation, right? So here in this case, in your case also, the building is considered to be, right over here, the building is considered to be the torsionally uncoupled building. Torsionally uncoupled building. Right. Now how to analyze this torsionally uncoupled building? Why torsionally uncoupled building? Because center of mass is equal to center of stiffness. So eccentricity is equal to 0. Is equal to 0. Right. And for this condition, you can consider your building to be torsionally uncoupled building. Now I want to analyze this building. Now what is meaning of analysis? As I explained earlier also, that what the meaning of this K1, K2, K3 in this is, suppose this is your building. Here okay, here so okay, so I have mentioned this thing with you, that the center of mass where the earthquake force is acting in x direction and in y direction, and the center of stiffness point, that means the point at which the stiffness elements are concentrating, right? That will offer the resisting power towards the earthquake force, right? So who will resist this EQX and EQY? The element which is available, lateral resisting element which is available in x direction and y direction. So in next stage, what we will do is, as we are doing the level 1 calculation throughout, so in level 1, as per our earlier calculation, level 1 is having Q1 force as 37.83, right? Also we have discussed that the earthquake force, that is the base shear in x direction and base shear in y direction is same, because the time period of the structure in x and y direction both are same, right? So this 37.83 is the lateral force resisted by my level 1,
right? Lateral load resisted by level 1. Now lateral force resisted by level 1, that means the element which are available, lateral resisting element which are available in your building, that will resist this 37 point something load. What was that? 37, 87, 18.17 or 37.83. Right, these are the two values in my sheet. Okay, Ma'am, so it we was have 18 made point. we have made some mistake in this height, right? So this one is the right one. So yes, level 1 is having 37.83 force in x direction also and in y direction also. Now what the next step is, from this 37.83, how much load will be taken care by each and every lateral resisting element? That part we are going to do after this, right? So this is our building. This is our building, and we have center of mass of this building, we have center of stiffness of this building, and we have lateral resisting element also. Now we will check that how much load from the 37.87 will be taken care by lateral resisting element available in this building, right? So how you can do that is, again I am drawing this same plan, that this is your 6 meter by 6 meter of building. This is also 6 meter, right? Then here the shear wall is available. So this is your shear wall, right? And here the columns are available. So these are the columns. Right, these are the columns. And as per our notation, this is my grid A, this is my grid B, this is C grid, center from the shear wall, this is my grid 1, grid 2 and grade 3, right? Now center of mass is acting at the center point. So here only at this point, this is my center of mass point, which is 3 meter from this origin and 3 meter from this, right? And the same point, my center of stiffness point is also acting. So this is same point where center of stiffness is acting. So this case is torsionally uncoupled, where eccentricity is equal to 0. And in a simple way, what is eccentricity? Eccentricity is equal to, if you require eccentricity in x direction, then that is equal to x center of mass minus x center of stiffness. Difference between center of mass and center of stiffness is known as eccentricity. If you required in y direction, then y center of mass minus y center of stiffness will be the eccentricity in y direction. But here in your case, eccentricity is 0. Now this is level 1. This is my level 1 of the building. And this level 1 is having the lateral forces in x direction and in y direction also. Right, so I'm just applying that x and y direction force. And what is that? Q1. Let me know what is Q1 for level 1. Q1 for level 1. Something 37.13.
Yes or no? Ma'am, it was 18.30. This one is the correct calculation, if I'm not wrong, for this building. See, it is not the, this 18.17. Okay, yes. So this is correct, right here? This 18.17 is correct, and 31.82. Yes, 18.17. So this Q1 is 18.17. Q1 is equal to 18.17 kilonewton. Right. Now remember this Q1 in x direction and Q1 in y direction, both are same because our base shear value is same. Right. So here in this case, this is my EQ, or sorry, Q1 in y direction. So Q1y. So this force will act at the center of mass, means at level 1 whatever the lateral force that are coming, that value you are applying to center of mass, right? And same way, this is my Q1x, same value, right? Means in x direction 18.17 kilonewton force is acting on this building, and in y direction also 18.17 force is acting. This x and y is lateral force in x direction and lateral force in y direction. Now this 18.17, now remember this is very important concept that I am explaining. This is my 18.17 kilonewton force in this direction, in y direction, right? What will this 18.17 will do? This 18.17 will push your building in this direction, correct? Because only transformation or translation will act for torsionally uncoupled building. So this will allow, this force will do the pushing force to this building, and this building will push like this. So this will be the deflection. Now to not allow this building to push, what lateral resisting element will do? This lateral element will give force from this direction, right? Will give the force from this direction in the same point itself, right? And which lateral element will not allow the pushing? The lateral element which is available in grid 1, grid 3 and grid 2 will not allow that deformation, or in another term, this 18.17 kilonewton force will be taken care by the lateral resisting element which are available in grid 1, 2 and 3. And this grid 1, 2 and 3, if you remember, we have considered grid 1, 2 and 3 with the stiffness in x direction, right? So the lateral stiffener available, or the element which is available in x direction, that will not allow our building to move in this direction, right? So this 18.17 will distribute it to grid 1, grid 2 and grid 3. So how it will distribute it, or how much load will be taken care by these grid 1, 2 and 3? And for that the equation is that K1 grid, if you want to find K1 grid, the load resisted by K1 grid, that equal to stiffness of K1 grid, individual stiffness of that grid, divided by total stiffness of the grid in y direction, in this, into your earthquake force or lateral force. So here lateral force is Q1y.
right? So if in general term, if I want to find the load resisted by lateral resisting element is equal to stiffness of that respective element divided by total stiffness in that direction. So y direction है तो vertical y direction grid only you need to consider into EQ force in that direction, right? EQ y नहीं लिखती हूँ because this is the common equation. So EQ force in that direction. So this one is the equation to find lateral force through the lateral resisting element, right? So now what is your K1? Please tell me what is K1? 17.86 into 10 raised to 17.86 into 10 raised to 6. चलो summation K is stiffness of element 1, 2 and 3, grid 1, 2 and 3. Total stiffness of 1, 2 and 3 that you have it from your previous calculation. 212.64 into 10 raised to 6. 0.64 into 10 raised to 6. Into earthquake force. Earthquake force is 18.17. Chalo, find out this K1. Find out K1. 1.53. 1.53 kilonewton. Means the meaning of this statement is from 18.17, 1.53 kilonewton load will be resisted by this grid 1, and in another word this 1.53 kilonewton force will be resisted by this 2 column which is available in grid 1, right? Now find out K2. Find out K2. K2 is equal to stiffness of grid 2 divided by total stiffness into Q earthquake force. What is K2? Stiffness of grid 2 you have divided by total stiffness is same 212.64 only into Q1 force. What is K2? Chalo. 15.12. 15.1 kilonewton. Now see the effect of shear wall in the strong direction. We'll see later on. First find out K3. Quickly find out K3. K3 is equal to stiffness of K3 grid divided by total stiffness into Q. You will get K3. You will get K3. Chalo. 1.53. 1.53 same 53 kilonewton, right? Now take a summation of 1.53 plus 15.1 plus 1.53. What is that? 18.17. 18.17. So this one is your check. So here see the importance of this shear wall which is placed
parallel to the stronger direction. So this is the shear wall placing where the moment of inertia of this shear wall about x-axis is stronger and your force is acting from this direction, right? So the stronger direction is facing the force, and that's why the building or the shear force, a shear wall will give more resistance towards that direction. So only from 18.17, 15.1 kilonewton is only taken care by the shear wall opposition and rest of the by column, right? But when you find this Ka, Kb and Kc, you will see that the influence of the shear wall in this grid C is very small compared to Kn and Kb, because in that case this was your force of the I mean earthquake force. So the placing of shear wall is like this. This is your weaker axis, yy is the weaker axis, and perpendicular to that the force is acting, right? And that's why the weaker axis will not give more resistance towards the earthquake force compared to the stronger direction of the shear wall. And that's why in earlier lecture also I have mentioned that shear wall is strong in one direction only, and whenever you feel that you require to provide more resistance towards the lateral force, you need to provide your shear wall stronger direction in that direction only, so that it will resist it. Clear the point? Yes, ma'am. Right. Now find out Ka, Kb and Kc quickly. Equation will remain same, Ka divided by summation K, and in that summation K is your summation of Ka plus Kb plus Kc into EQ force in X direction. Here the direction force is same as 18.17. Chalo. Find out Ka. Summation Ka means Ka plus Kb plus Kc, this whole multiply by Q1 X. Chalo, what is K? What is K? Chalo, 8.65 kilometer. 8.65. KB? And K. Same. KB is same, yes, 8.65. And now tell me Kc. Kc. Arey, how much time you will take to simple 0.85. 0.85 kilonewton. Now here you can clearly see that the orientation of shear wall is same. Only by changing the earthquake direction, the influence of the resistance power of this shear wall in one direction is 15.1 and in other direction is 0.85. So there is no influence of taking the resistance towards the lateral force for this shear wall in this direction if the earthquake force will come in X direction, but yes, it will strong in Y direction. Clear? Yes, ma'am. Right. So this is the calculation for lateral
load distribution, see the title of this calculation, lateral load distribution to lateral resisting element. What we did in first was VB distribution, what we did in last is we find the base shear and distribution of base shear to height of the column like Q1 and Q2 like this, right? And now we have distributed this Q1, Q2, Q3 forces to all lateral resisting element. आइडिया क्लियर हो रहा है? क्या किया हमने ये कैलकुलेशन? पहले हमने फाइंड किया बिल्डिंग का बेस शियर, बिल्डिंग पे कितना लेटरल फोर्स आ रहा है वो हमने फाइंड किया. उसके बाद वो फोर्स कहाँ पे ट्रांसफर होगा? फ्लोर पे ट्रांसफर होगा, बिकॉज दिस इज लंप मास मॉडल, सो ऑल द फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय द फ्लोर. तो फ्लोर पे हमने लेटरल फोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया. अभी ये जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे जाएगा? जो भी आपके फ्लोर पे लेटरल रेजिस्टिंग एलिमेंट है उसके ऊपर वो ट्रांसफर होगा. ट्रांसफर होगा, द मीनिंग ऑफ दैट दिस स्टेटमेंट इज व्हेनेवर यू आर designing this lateral resisting element like this columns, at that time you need to consider this force into calculation. Are you knowing about portal method and cantilever method? Are you all are aware about portal and cantilever method for the lateral load analysis? ऐसा कुछ आपने पढ़ा था एनालिसिस में, है ना? So whatever this calculate, this is force, suppose x, y and z, this is your building, this is your frame building, and in this frame building at each and every point what are the lateral forces acting? That is x, y and z, and this x, y and z is nothing but your this k1, k2, k3, ka, kb and kc, राइट? तो ये जो लेटरल फोर्स है वो लेटरल फोर्स यहाँ पे आपको अप्लाई करना है. और उसके बाद फिर आप ये ऐसा डायग्राम आपने ड्रॉ किया था लाइक दिस, राइट? सो फ्रॉम आफ्टर दिस और यूडीएल लोड भी होगा आपका, और ये है आपका लेटरल फोर्स. लेटरल फोर्स और यूडीएल की वजह से पोर्टल या कैंटिलीवर मेथड में से यू कैन फाइंड बीम में मोमेंट कितना आया, बीम में शियर कितना आया, कॉलम में मोमेंट कितना आया, कॉलम में शियर कितना आया. उसके बाद आप उसका डिज़ाइन करो, राइट? सो दिस एक्स वाई जेड इज नथिंग बट द लेटरल फोर्स रेजिस्टेड बाय लेटरल रेजिस्टिंग एलिमेंट. मतलब कि जो Q1 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये दो कॉलम में, तो ये दो कॉलम की डिज़ाइन करने के टाइम पे हमें लेटरल फोर्स कितना लेना है? तो ये K1, K2, K3, मतलब यहाँ पे अगर K1 है तो K1 में दो कॉलम है, तो दो कॉलम है तो 1.53 किलोन्यूटन है, तो दो कॉलम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा. 1.53 डिवाइड बाई 2 विल बी टेकन केयर बाय दिस कॉलम, 1.53 डिवाइड बाई 2 विल बी टेकन केयर बाय दिस कॉलम. और अगर ये सिमेट्रिकल कॉलम है, इसलिए अगर डिफरेंट होगा, बहुत सारे कॉलम है, दो नहीं है, तीन है, चार, पाँच है, तो उसका कैलकुलेशन करना हो तो क्या करोगे? फिर से ऐसा ही करना है. K1 आपको पहले मिल जाएगा 1.53. सपोज ये एक ग्रिड है आपके पास, उसमें इतने सारे कॉलम्स हैं ऐसा, राइट? और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के हैं, वो सब कुछ अलग है ये कॉलम के लिए. तो सपोज ये C1 कॉलम है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, और ये मेरा कोई ग्रिड A है, और ये ग्रिड A के लिए मुझे टोटल Ka मिल गया समथिंग, आई एम अज्यूमिंग 3 किलोन्यूटन, कि ये ग्रिड का मुझे 3 किलोन्यूटन है. मतलब ये 3 किलोन्यूटन लोड मेरा ये ग्रिड पे जाएगा. अभी अगर डिज़ाइन करने के लिए आपको C4 कॉलम की डिज़ाइन करनी है तो आपको क्या चाहिए कि ये C3 कॉलम में एक्सियल लोड कितना आता है और लेटरल फोर्स कितना आता है. तो लेटरल फोर्स जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करोगे कि ये 3 किलोमीटर का कोई परसेंटेज ये C4 लेगा, तो वो कितना लोग लेगा. अगर ये फाइंड करना है तो फिर से यही इक्वेशन लगाना है
KC4 के stiffness I mean the force taken care by C4 column is equal to, ये यहाँ पे K मत डालो, C4 is equal to stiffness of C4 column, मतलब जो कॉलम के लिए चाहिए उसकी stiffness divide by total stiffness of that grid K into, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? Can anyone tell me? 3 kilonewton. Yes, yes, very good. Yes, 3 kilonewton. Here you need to write down 3 kilonewton. And this K is not, K क्या है? Stiffness of lateral resisting element in grid A, राइट तो ये के क्या होगा आपका, यहाँ से आपका जो के का वैल्यू था वो जो भी होगा वो स्टिफनेस की वैल्यू डालनी है, ठीक है। ये तो लोड जो लेगा वो है के इक्वल टू 3, क्या है कि यहाँ पे 3 किलोन्यूटन का लोड वो रेजिस्ट करेगा। पता चल रहा है एवरीवन 3 किलोन्यूटन क्यों लिया हमने यहाँ पे? क्योंकि 3 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये समझ लो। किसी भी लेटरल फोर्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो इक्वेशन क्या रहेगा, दैट जो भी लेटरल रेजिस्टिंग एलिमेंट है उसका स्टिफनेस डिवाइड बाय वो ग्रिड में जितने भी रेजिस्टिंग एलिमेंट है उसका स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाय जो फोर्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट यू विल गेट दिस C4। आगे आपको क्या करना था, आगे आपको ये क्यूब फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था ए ग्रिड में, तो आपने ये इक्वेशन अप्लाई किया। जेनिश, रिया, यस मैम। Yes, ma'am. कौन है अदर? रिद्धि, ईशान, हिमानी, यस मैम। पता चला? और वो Yes, जो ma'am. होगा फिर वो जो C4 फोर्स होगा, जब कॉलम की डिजाइन आप करोगे तब आप कॉलम के लिए एक्सियल लोड तो आपको मिल जाएगा डिजाइन में, मतलब कैलकुलेशन में से, एनालिसिस में से, और लेटरल फोर्स अगर फाइंड करना हो तो इस तरीके से आपको C4 कॉलम में लेटरल फोर्स फाइंड करना है। क्लियर? So this is about analysis of torsionally uncoupled building. This is torsionally uncoupled building. Torsionally uncoupled. अभी torsionally coupled building का analysis is somewhat different because torsionally uncoupled building, torsionally coupled building is having translation also and rotation also, right? As per this slide, as I discussed earlier, that torsionally coupled building is having center of mass not equal to center of stiffness, so you will get the eccentricity either in x direction or y direction or in both direction. So your building will move in translation also, in rotation also, right? So the analysis of that building is somewhat different than the torsionally uncoupled building. So this part we will do in next lecture, in next extra lecture, and that way we will complete our this particular chapter, that is design of lateral load analysis of reinforced concrete building. So in that way, in that class we will finish the this particular chapter. But before that, I am showing you some example that I have with me. I will share this notebook also with you, because in last I have provided many examples, but this time the not getting that much of time. Rotate કેવી રીતે કરીશું?
Okay. See here, one example is given. You read, I mean, you can use this. This is one example where determine the lateral force, that is base shear, on a two-story unreinforced brick masonry building situated at Roorkee. Plan size of the building is given. Total height of the building is given. Weight of the slab is given in 2.5 kN per meter square. Weight of the wall is also given. Live load is given and type of soil is medium soil. So here the change, I mean the only change you need to do is rather performing Excel sheet. Here direct self weight of the slab is given in terms of 2.5 kN per meter square. So to get the value of slab, what you required is you need to multiply with the area. So here that calculation is made, that dead load equal to weight of the slab plus weight of the wall. Only two elements are given, weight of the slab and weight of the wall. So slab ka weight if you want in kilonewton, so that is 2.5 into area of slab. So here plan dimension is given 20 meter by 20 meter. So 20 into 20, 1000 will be the slab weight. Right. Then weight of the wall. Now wall is the vertical element, so that weight you need to transfer half above and half below. So if you're performing first floor calculation over here, then if this is 3 meter and 3 meter, then on first floor the wall half weight is transferred to the first floor from the bottom story and half will be from the top story. So ultimately height of the wall for this first floor will be 3 meter, right? And weight of the wall is given 5 kilonewton per meter square. So to convert into kilonewton, you require to multiply with height and with the length. तो लेंथ क्या होगा यहाँ पे, चार मतलब ये प्लान है 20 मीटर बाय 20 मीटर, तो ये चारों साइड वॉल होगा. सो 4 टाइम्स 20, 4 टाइम्स 20 20 20 20, सो 4 टाइम्स 20 इनटू 3 मीटर. सो यहाँ पे 1.5 प्लस 1.5 लिखा है. सो 1200 इज योर फर्स्ट फ्लोर वेट फ्रॉम द वॉल. So addition of these two will give the dead load value. Then live load is given as 1 kN per meter square. As per codal provision, less than or equal to 3, तो आपको 25% लेना है. तो यहाँ पे live load 25% लिया. तो weight of the first floor W1 is equal to 2200 plus इसका 100, तो 2300 किलो न्यूटन. अभी जब आप सेकंड फ्लोर का कैलकुलेशन करोगे तो वेट ऑफ स्लैब विल रिमेन सेम. व्हाट विल बी द चेंज, कैन एनीवन टेल? What will be the change in wall? Where will be the change in wall? Hmm? Height. Height. कितना हाइट लेना पड़ेगा सेकंड फ्लोर के लिए? 1.5. 1.5. वेरी गुड, राइट. 1.5. सो 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लेना है आपको. मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो वो आपका हो जाएगा वेट ऑफ वॉल. वेट ऑफ स्लैब सेम रहेगा, तो आपको टोटल लोड मिल जाएगा. टोटल लोड मीन्स W इज इक्वल टू W1 प्लस W2. फिर आप AH फाइंड करो, Z/2 I/R SA/G, आपको AH मिल जाएगा. फिर आप VB फाइंड करो, AH इंटू W, यू विल गेट VB. फिर डिस्ट्रीब्यूट करो VB को Q1 Q2 फाइंड करके. सो यू हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड,
right? So this way also the question will be asked that you have been given with some self weight in terms of density into कोई पैरामीटर का वैल्यू दे दिया होगा. At that time you need to see what is the unit of that particular element is given. स्लैब का यूनिट आपको किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में दिया था, यहाँ पर भी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दिया है वॉल का. तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट यू नीड टू थिंक. फॉर स्लैब आपको एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉर वॉल आपको हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. थिकनेस नहीं मल्टीप्लाई कर सकते बिकॉज थिकनेस इज नॉट गिवन. इफ इट इज नॉट गिवन दैट मीन्स द सेल्फ वेट इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस, राइट. सो ये ऐसा छोटा एग्जाम्पल है, वो आप करो. फिर अगेन वन मोर एग्जाम्पल फॉर द प्रैक्टिस यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 2, वो भी आप एक्सरसाइज में ले सकते हो, राइट. देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी आपको क्लास में करवाया, बट मतलब जो ट्यूटोरियल में दिया, बट इन योर ट्यूटोरियल आई हैव गिवन विथ ऑल दिस कॉलम विद द सेम डायमेंशन, all these 4 column with the same dimension, right. यहाँ पर भी, बट यहाँ पे क्या है देखो, एक रेक्टेंगल सी ऐसे है, यहाँ पे सी बी कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज है, फिर ये मैंने 2 सर्कुलर कॉलम दिए हैं. सो दिस इज द केस वेयर टॉर्शनली कपल्ड टाइप ऑफ एनालिसिस विल बी परफॉर्म, राइट. तो यहाँ पे सेम है जो आपको कैलकुलेशन में दिया, उस टाइप का सेम कैलकुलेशन किया है, देखो नोटबुक में किया है. द सेम टेबल है प्रिपेयर्ड, राइट. सो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबका ये पूरा टेबल बनाया है. सबके लिए उसका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास इन एक्स एंड सेंटर ऑफ वाई फाइंड किया है. ये सब कुछ किया है देखो यहाँ पे. फिर वीबी का कैलकुलेशन भी किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीबी Q1, Q2, Q3, Q4 सब कुछ फाइंड किया है यहाँ पर, ठीक है. फिर ये एग्जाम्पल के बाद मैंने ये थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल करवाया था, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास. तो वो कैसे किया है, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि ये एक बिल्डिंग है, 6 कॉलम है, right. Now this portion of slab that is 10 meter by 4 meter is having self weight of slab as 20 kilometer per meter square, and rest of the portion is having weight as 10 kilometer per meter square. और आपको फाइंड करना है कि ये बिल्डिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे होगा. तो आई हैव डिस्कस व्हाट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच द मास ऑफ द बिल्डिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड, राइट. हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, सो मैंने आपको वो भी कैलकुलेशन करवाया था कि W इंटू एक्स आई अपॉन समेशन W, राइट. तो यहाँ पे आपको सेल्फ वेट दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, राइट. तो उसका वेट कैसे मिलेगा आपको, 20 इंटू एरिया ऑफ दिस पोर्शन ऑफ स्लैब. सो 20 इंटू 10 इंटू 4, उसके साथ आपको ये एरिया का CG डिस्टेंस इन x डिरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन से मल्टीप्लाई करना है. तो ये 10 मीटर बाय 4 मीटर है, 10 मीटर x डिरेक्शन में है, तो उसका CG कहाँ पे होगा, 5 मीटर पे, और वो 5 मीटर्स ओरिजिन से कितना दूर है, 5 मीटर ओनली. सो 20 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 5. तो यहाँ पे देखो 20 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 5, ये देखो ये कैलकुलेशन 20 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 5. सेम वे ये एल शेप का स्लैब बना है, तो उसको मैंने 2 में डिवाइड कर दिया. ये ऊपर का रेक्टेंगल पोर्शन, नीचे का भी रेक्टेंगल पोर्शन, ठीक है. तो ये सेकंड स्लैब है, उसका एरिया क्या है, मतलब सेल्फ वेट क्या है, 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. तो उसका लोड कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 4, ये 10 बाई 4 का ही स्लैब है. तो 10 इंटू 10 इंटू 4, अभी उसका CG डिस्टेंस क्या होगा, तो ये 10 मीटर के लिए CG क्या होगा, 5 मीटर, लेकिन हमें तो लेना है ओरिजिन से, तो कितना होगा, ये 10 प्लस ये 5, सो 15. सो 10 इंटू 10 इंटू 4, तो देखो यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 15. फिर मेरा तीसरा स्लैब, तो ये मेरा तीसरा स्लैब है, उसका एरिया क्या है, 20 मीटर बाय 4 मीटर का. सो 10 इंटू 20 इंटू 4 वो मेरा वेट हो गया. CG डिस्टेंस क्या होगा, x डिरेक्शन में लेंथ कितनी है, 20 मीटर, तो उसका CG क्या होगा, 10 मीटर पे. ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होगा, 10 मीटर. तो इसका फोर्स क्या होगा, 10 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 10. सो 10 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 10. तो ये हो गया मेरा WI इंटू XI. और टोटल डिवाइड में क्या करना है, टोटल W. तो टोटल W क्या होगा, यहाँ पे देखो 20 इंटू 10 इंटू 4
10 इंटू 10 इंटू 4, 10 इंटू 20 इंटू 4, जो 6G डिस्टेंस है उसको नहीं लेना है, उसके अलावा सब कुछ समेशन कर देना है. You will get the center of mass as 9 meter, center of mass in y direction as 4.4 meter. So this one is very small example where you can find only center of mass by giving the value of self weight. राइट. दूसरा कुछ नहीं दिया है तो ओनली यू आर कंसिडरिंग स्लैब. अगर कॉलम का कुछ डायमेंशन दिया होता तो आपको कॉलम का भी ऐड करके यू नीड टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, बट कॉलम का कुछ नहीं दिया है. यहाँ पे लिखा है इग्नोर द वेट ऑफ द कॉलम. तो सिर्फ आपको स्लैब की लिए ही आपको उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कैलकुलेट सेंटर ऑफ स्टिफनेस वाला. तो यहाँ पे क्या किया है, देखो हर कॉलम रखा है और 4K और K लिखा है. नाउ व्हाट इज 4K? 4K इज द स्टिफनेस ऑफ दिस कॉलम अबाउट x एक्सिस. क्योंकि ये अगर रेक्टेंगल कॉलम है तो उसका x एक्सिस ज़्यादा होगा 1/12 BD क्यूब की वजह से. तो 4K इज द स्टिफनेस of this column about x axis and K is the stiffness of column about y axis. ठीक है. तो आपको मैंने ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन करवाया था आपको पहले लास्ट संडे के लेक्चर में, उसमें जो हमने K1 ये जो फाइंड किया था सब कुछ, ये स्टिफनेस इन x डायरेक्शन, स्टिफनेस इन y डायरेक्शन, यस ये पोर्शन, ये KCX, KC2X, KCY, ये मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये डायरेक्टली गिवन है. दिस इज डायरेक्टली गिवन. ओनली यू नीड टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्टिफनेस. सेंटर ऑफ स्टिफनेस का इक्वेशन ये अप्लाई करना है आपको. ठीक है. सो इन दैट केस आई हैव डिवाइडेड अगेन इनटू ग्रिड. हॉरिजॉन्टल के लिए ग्रिड 1, ग्रिड 2, वर्टिकल ABC. जो वर्टिकल ग्रिड है उसके लिए आपको x एक्सिस का समेशन लेना है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड है उसके लिए y एक्सिस का समेशन लेना है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x सेंटर ऑफ स्टिफनेस इज इक्वल टू Ka इंटू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन x डायरेक्शन, Kb डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और Kb ग्रिड मतलब 10 मीटर और लास्ट में होगा पूरा 20 मीटर, डिवाइड बाई Ka प्लस Kb प्लस Kc. So you can get the x center of stiffness and y center of stiffness. I request all of you to go through this note because this is having many small example that we did in classroom. So you can get the better idea how to find separate center of stiffness and center of mass. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा center of stiffness in x direction 10 meter and यहाँ पे 4 meter because this is symmetrical. So by seeing the plan only you can get this is 10 meter and this will be 4 meter. But in second example यहाँ पे देखो मैंने ये जो लास्ट कॉलम है यहाँ का मैंने ओरिएंटेशन चेंज करवा दिया, उसका स्टिफनेस वैल्यू भी चेंज करवा दिया. सो ऑब्वियसली द सेंटर यहाँ पर भी ये देखो स्टिफनेस मैंने चेंज करवा दिया था तो यहाँ पर भी चेंज है. ठीक है. तो ऑब्वियसली द स्टिफनेस वैल्यू विल चेंज. तो आपको यहाँ पे स्टिफनेस का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा, ज्योमेट्री के सेंटर पे नहीं मिलेगा आपको. तो दैट एक्सरसाइज ऑल्सो हियर इट इज परफॉर्म. राइट. देन वन मोर एग्जाम्पल आई हैव इन दिस कि यहाँ पे सब शेयर वॉल दी है, ये सब है शेयर वॉल और ये सब शेयर वॉल यहाँ पे प्लेस की है और उसके लिए आपको सेंटर ऑफ स्टिफनेस फाइंड करना है. ठीक है. तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना. अगर आपको नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, then we will take the extra lecture. In that we can discuss this point. ठीक है. फिर वो जो एग्जाम्पल था आगे का मैंने जो आपको बताया उसका कंटिन्यू पार्ट यहाँ से चालू होगा. ये जो है एग्जाम्पल, ये जो मेन एग्जाम्पल, इसका सेंटर ऑफ स्टिफनेस कैसे फाइंड करना है तो उसका कैलकुलेशन अभी यहाँ से स्टार्ट होगा. बीच में थोड़े स्मॉल एग्जाम्पल करवाए, फिर बाद में यहाँ से क्वेश्चन 3 कंटिन्यू है. तो ये सेंटर ऑफ स्टिफनेस कैसे फाइंड किया, जो अभी हमने किया वैसे ही इसका सेंटर ऑफ स्टिफनेस फाइंड किया. ठीक है. फिर यहाँ पे देखो टॉर्शनल, ये फिर यहाँ पे देखो ये है ये इक्वेशन जो मैंने अभी आपको करवाया था कि टॉर्शनली अनकपल्ड बिल्डिंग हो तो फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे करवाया है ये बिल्डिंग के लिए. राइट. फिर टॉर्शनल बिकॉज हमारा ये जो बिल्डिंग है, ये जो कंटिन्यू एग्जांपल है वो टॉर्शनली कपल्ड है. तो यहाँ पे देखो ये टॉर्शनली कपल्ड है.
तो ये जो एक्सरसाइज है, मतलब ये केस 2 वाला कैलकुलेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना पोर्शन हमारा रिमेन है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So that we will do in next lecture, probably in this week only in afternoon, whenever all of you are and myself will comfortable, and we'll finish this particular chapter, right? And maybe we'll discuss that masonry building design also, that I have posted video with you. ठीक है. सो आई एम शेयरिंग दिस क्लास नोटबुक विथ यू. आप उसको पूरा बराबर से चेक कर लेना. वेर एवर यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, एनी मिस्टेक, और यू फाइंड एनी क्वेरी, डाउट, just mark there. We will discuss this, but I request all of you to go through this particular notebook, because these are having many examples. And yes, any doubt?